Okay, a very warm welcome to all of you for taking out time on a Sunday afternoon and attending this webinar. This is for creating awareness related to PCOS. As all of you know, PCOS has become a very common problem nowadays encountered amongst women. Almost 1 in every 10 women is found to be suffering from PCOS. And this is something which is affecting usually the women in the reproductive age group, that is between 15 to 35 years of age. This is the age in which women are commonly affected. And I wanted to have this webinar on the occasion of Women's Day. This webinar is through the initiative Let's Talk Women's Health, which is based on the concept of triple E, that is empowering and enlightening women through education. So let's talk women health. Let's talk about women's health. This will act as one-stop destination for getting authentic evidence-based information pertaining to various issues related to women's health. So as you all know that today we have with us Dr. Renuka, who is a gynecological laparoscopic surgeon. We also have Mrs. Parul Mudit Mishra, who is a fertility coach and lactational counselor. You all know me. I'm Dr. Richa Saxena. I'm an obstetrician gynecologist and a published author. And I'm also the founder of this initiative, Let's Talk Women's Health. So with this in mind, and with Women's Day in mind, let's take a pledge. Let's all of us believe that we are powerful, we are whole, we are complete, we are strong, and no matter whatever illness is there, we will be able to take more about your mindset. If you are in control of your own self, you'll be able to handle this problem. But if you're not in control of yourself, and if you feel that you're not powerful, or if you're stuck up with the problem, then you'll not be able to overcome it. So that is what is more important with this. So as I was already telling all of you that this is a common endocrinological disorder which is encountered by women of reproductive age group. 15 to 35 years is the age where the women are most commonly affected. कैसे पता चलेगा आपको कि PCOS है? I mean, what are the clinical features, or how would you know that you have PCOS? Anybody would like to type in the chat? Because I have patients coming to me telling me that, okay, we are obese, we are fat, your periods painful hai, your periods aa nahi rahe, isliye PCOS hai. Because it is so common and around us, so many people are suffering from PCOS. So हमें थोड़ा सा भी कोई problem होती है लगता है कि PCOS होगा. How exactly can we be sure that PCOS is there? So one symptom which Diksha has mentioned in the chat, irregular periods. Irregular periods isliye because ovulation, which normally occurs, we'll be talking about that later in the presentation, that why exactly periods become irregular, because ovulation हो नहीं रही होती या ovulation बहुत कम हो रही होती है. We'll talk about the mechanism, how it occurs later in the presentation. So one is periods are irregular because there is absent ovulation or no ovulation. Second is there are clinical or biochemical features of hyperandrogenism. Hyperandrogenism मतलब body में male hormones, which is known as androgens, ये बढ़ने लगते हैं, और इसकी वजह से there are certain clinical symptoms, या वो ब्लड में ब्लड टेस्ट होते हैं तो आपके उसमें हॉर्मोन्स बढ़े हुए मिलते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज कि अल्ट्रासाउंड में आपको पॉलिसिस्टिक ओवरीज की अपीयरेंस होती है. ये तीनों फीचर्स होने की जरूरत है. इनमें से तीन में से दो फीचर्स भी इफ दे आर प्रेजेंट out of 3, if 2 features are also present, then you are diagnosed, then you know that yes, you are suffering from PCOS. So बहुत सारे patients जो आते हैं कि we are getting fat, that doesn't mean that you have PCOS. Also lots of patients, they complain that ultrasound में तो आया नहीं PCOS, तो PCOS कैसे हो सकता है. But अगर आपका बाकी दो चीजें हैं कि there is on blood
tests or on clinical features, they are suggestive of increased androgen levels, yeah, increased male hormone levels in your body. That, and second, your infrequent or absent ovulation. If these two are present and there is no ultrasound appearance of polycystic ovaries, तब भी हम कह सकते हैं कि PCOS है. So this is the appearance how your ovaries will look in PCOS. अगर आप देखें तो ये ओवरी में हर महीने ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं. उनमें से एक फॉलिकल सबसे ज्यादा डेवलप होता है which results in ovulation, and that produces an egg which will ultimately travel through the tubes and will move down to the uterus. ये this is normal ovaries. But PCOS में क्या हो रहा होता है कि ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता ही नहीं है. तो एक साथ बहुत सारे follicles they start developing, and therefore this results in this pearl necklace like appearance. ऐसा लगता है मोतियों की माला है कि बहुत सारे छोटे छोटे cysts, क्योंकि follicles जो नॉर्मल तरीके से उनको ग्रो होना चाहिए था वो ग्रो होते नहीं है. सो ये किस लिए होता है, इसका कॉज क्या है? द कॉज इज नॉट नोन. Probably some people say that it is genetic factors. तो अगर आपके मदर को या आपकी सिस्टर को PCOS है तो आपको PCOS हो सकता है. प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स. आप क्या खाते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, वो चीजें भी इफेक्ट करती हैं PCOS के होने में. So अब now I'll tell you what exactly is the mechanism, what imbalance. We all know there is an endocrinological imbalance which occurs. Normally, body mein, in a female body, there are two hormones which are produced. One is FSH, which is follicle stimulating hormone, and the other is LH, or the luteinizing hormone. And these two hormones, they are responsible for producing the female hormone, which is the estrogen and the progesterone. और इन दोनों hormones के तालमेल से जब इनका तालमेल ठीक होता है तो there is growth of follicles in the ovary, and एक follicle जब बड़े साइज का हो जाता है वो ovulation cause करता है. और अगर इन hormones में imbalance हो जाएगा तो excessive amount of male hormones or androgens are produced in the body, and that results in various clinical symptoms जैसे facial hair growth, acne, आपका skin बहुत मोटा हो जाएगा या acne आने लगेंगे. That is all because of these male hormones. Also, there is something which is known as insulin resistance. कोई बता सकता है insulin क्या काम करता है हमारी बॉडी में, और what is the function of insulin in our body? It works on pancreas, right? हाँ, it works on pancreas. Yes. It basically helps in bringing down the blood glucose levels. तो जिन लोगों को diabetes होता है उनको उनमें इंसुलिन कम होता है और उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. तो सब आपको पता है. आप, I think all of you must be knowing that. So what is this thing called insulin resistance? Insulin resistance means insulin है body में but it is not acting. There is resistance to insulin, to the action of insulin. So आपके इंसुलिन है but इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं. So this kind of increases the risk of diabetes, which is also the type 2 diabetes. So this is what is happening now. Through some pictures I'll show you what exactly is the mechanism. थोड़ा complicated है. So this you can see, this actually is the brain, और इसमें there is a hormone, ये जो गोल सा है, this is known as the pituitary gland. और यहाँ आपके सारे body के hormones produce होते हैं. The hormones we spoke about, FSH and LH, the follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone, they are produced here, and then they will travel down to the uterus and to the ovaries.
तो ये I think everybody knows that this is the uterus, this is the ovaries, these are the fallopian tubes. तो ovaries तक आपके ये hormones जो FSH और LH है ये जाते हैं. This is a more magnified view of the same ovary and the fallopian tube. This is the ovary and this is the fallopian tube. This ये जो फूल जैसा structure है ये this is the end of the fallopian tube और इसको कहते हैं हम फिम्ब्रे. ये ओवरी के अंदर का मैग्निफाइड व्यू है जो हमने पहले भी बोला था कि ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं हर महीने. जो हर मासिक चक्र में या एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल there are multiple follicles which start developing, but eventually in the end one follicle it grows. ये देखिए ये येलो जो है कई सारे follicles they start developing every month in the menstrual cycle, but ultimately only one follicle it grows in size and that is known as the dominant follicle. वो इतना बड़ा हो जाता है और फिर जब वो बड़ा हो जाता है then ovulation takes place. And this is all occurring under the effect of the hormones जो हमने बात की थी FSH and LH जो pituitary gland से आ रहे होते हैं. तो one follicle it grows and it increases in size. उसके बाद जब ये follicle बहुत बड़ा हो जाता है it ruptures and this is the process which is known as this is the egg, the female egg, and this then is engulfed by this fimbriae or the fallopian tube and then this passes through the fallopian tube. ये अगर आपने देखा कि ये जो अंडा प्रोड्यूस हुआ है from the ovary, this travels through the fallopian tube. This is collected by the fallopian tube and then it passes through the tube. Agar if during that process the sperms are also traveling through the cervix, through the uterine cavity and into the fallopian tube, then the fertilization will take place. That is, the sperm will meet the egg. So agar if at that time the husband's semen is deposited and the sperms they travel, the sperms they will actually fertilize the egg. This is the time the fertilization when it occurs. This will result in producing the embryo. The embryo which is the future baby. This embryo will then travel through the fallopian tubes into the uterus, into the cavity of the uterus. It will get implanted there. ये आप देख रहे होंगे कि this is getting implanted. And result in the formation of this embryo, which is the future baby. This is how normally what happens in a normal person. And in case fertilization does not occur. So ये आपने देखा कि the ovulation takes place, but because there are no sperms, the ovum, the degenerated egg, along with the lining of the uterus, this is shed and this is the menstrual cycle. Now this happens in a normal person, a normal woman who is not suffering from PCOS. Now what happens in case of PCOS is what we were talking about, the follicles they start developing. In PCOS, multiple follicles they start developing, or बहुत सारे follicles, छोटे follicles they start developing, and none of the follicles reach a size that it can become a dominant follicle and eventually result in ovulation. So ultimately, all the follicles, the small follicles, they die off. They collect fluid within them, resulting in the formation of cysts. So ये अगर आप देखेंगे, if you see that there are these follicles, they get converted into these cystic structures. And this is what is responsible for resulting in the cyst-like appearance in the ovaries. So as a result of formation of the cysts, the small cysts, here jo pearl of necklace-like appearance, this is how the ovary starts looking in a polycystic person, in a person who is suffering from polycystic disease. Since this is a lifestyle disease, related disease, one of the most important way of managing this disease is through lifestyle changes.
Lifestyle changes के बारे में Dr. Renuka will be telling in more details. I will not be telling much about it. Main thing is that the BMI should be between 18.5 to 24.9. This is what the body mass index you should aim at maintaining, between 18.5 to 24.9. We have several patients over here. How many of you don't know your BMI or have no idea about BMI? Or how many of you have an idea about BMI? Can you just mention on the chat? Because this is something which is more important even than the medicines for PCOS. So BMI is body mass index, which is calculated कि आप अपने weight जो आपने kgs में नापा है, that you divided by your height, which feet को आप meters में convert करेंगे, and then you square it. So if suppose you are 5 feet, that will be about 1.5 meters. And suppose you weigh 60 kgs. So 60 divided by 1.5 into 1.5. That is the BMI. Bringing your BMI to less than 25 will not happen in a day. You have to keep working towards it. आपको अपना lifestyle, dietary changes, exercise, and everything to bring your BMI less than 25, which is the most important part of managing a case of PCOS. फिर some women, like they've mentioned here also, they suffer from irregular periods. So for them, oral contraceptive pills, they can be used. Again, lots of people, they don't want to go ahead with using the oral contraceptive pills. But I think it's a okay decision to use them because it will basically normalize the hormonal levels. आप artificially body में hormones दे रहे हो through the oral contraceptive pills, तो आपके hormonal levels they come into a balance, and the women, you will start having periods by taking oral contraceptive pills. Also, agar you are having problems like excessive facial hair or hair growth, then the pills can be prescribed accordingly. And also the oral contraceptive pills, they will have in them what a hormone which is known as progesterone. Progesterone आपकी जो uterus की lining है उसको protect करता है, and which is very, very important. Lots of women, they suffer from infertility because of PCOS and they're not able to conceive. So for them, there are medicines for inducing ovulation. Infertility is occurring in cases of PCOS because ovulation is not occurring. So in those cases, you can give fertility inducing drugs such as clomiphene citrate, letrozole, etc. If the problem is related to excessive facial hair, then I normally prescribe the physical methods like shaving, waxing, laser therapy. बहुत extreme condition में anti-androgen drugs, because again, androgens, the male hormones, excessive amount of that is responsible for resulting in excessive facial hair growth. And they will be growing in all wrong places. Like जहाँ पे नहीं होने चाहिए वहाँ पे होंगे. So for that, अगर बहुत ज़्यादा problem है तो anti-androgen drugs like spironolactone, etc. can also be given. Somebody is saying is it curable? It is not curable. It's just that we can use medicines to reverse the symptoms. जो symptoms patient को हैं वो हम दूर कर सकते हैं by using medicines, but हम बीमारी को जड़ से नहीं हटा सकते. This is the main problem with PCOS. But हाँ, अगर आप lifestyle changes अपनाएं और आप BMI को control में रखें तो काफी हद तक जो problems हैं, they remain under control. If medicines don't work, then there's also surgery which is known as laparoscopic ovarian drilling, जिसमें ओवरी में laparoscope की मदद से, laparoscope is basically दूरबीन की मदद से कुछ holes create किए जाते हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. तो in women in whom medicines don't work, surgery can also be used. So investigations ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि blood levels of which include androgens, also FSH, LH,
And because there is a associated insulin resistance, blood glucose levels, monitoring the blood glucose levels becomes important, and ultrasound pelvis. ये तो हम बात कर चुके हैं. More important than any medicine, more important than any, important to have a positive mindset. Listen to your body and connect with yourself, which is most important. Up, not to blame yourself कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों, there is some problem with me, that is why God, thing like that. Remember, you are strong, you are powerful, you are a woman, and you have the power to take control of your problems. Diksha is asking, PCOD में conceive कर सकते हैं? Of course कर सकते हैं. So that was, yes, I think that finished. Thanks for listening, and that was all. Now I would like to introduce Dr. Renuka. We spoke about the lifestyle changes which become very, very important in cases of PCOS. She will be talking about the lifestyle changes which need to be followed in these cases so that you are able to take care of your PCOS problem. Okay, it was elaborative and the more informative and the mind blowing the information what madam gave, and it was such a wonderful thing. Yeah, a healthy lifestyle in dealing with PCOS. We can consider with this with the four entities, that is weight management, the sleep, and the exercise and diet, and the stress management. As you know, madam has definitely elaborated with the weight management, and this weight as a entity, you can understand whether the weight, the overweight will cause PCOS, or the PCOS cause increase in weight or the obesity is still not known. But still there is a vicious cycle with that, and we have to break that vicious cycle. That is in turn with a vigorous awareness about it, and our mind has to deal with that. And not only the weight management, okay, we'll go to the doctor and we'll have a consultation, and then we'll just listen to, and then again we go to a dietitian, and again sometimes we have a mentor, and we do yoga, even the exercises. But our mindset itself is not changed, we just have some 4 5 days, the new year comes, then we do some commitments or whatever, some resolution, and then we finish it off within 20 days. No, that may not help the PCOS, the entity what our body is suffering. The vigorous, it may not have affected with a vigorous treatment or vigorous this thing, but the mindset to have a exercise consistently, and that we now dealing with the weight calendar. Weight calendar means now, as madam told, that is the calculation of BMI. That is very simple method that can be dealt with, and even our hip and waist measurement, waist by hip ratio, there are many things to think, but how the doctor or the any professional advice, it has to be followed up. And the weight management things, BMI and other impacts, how it can be dealt with, it's, you should know about it. And this hormonal imbalance, right? A hormonal imbalance, as we know, even to get a menstrual cycle or the menstrual flow, we need a balance in our estrogen and progesterone. Estrogen will initially secreted by the same follicle, this a growing follicle, that will help in the growth of the endometrium, that is a cavity lining, right? That cavity lining, if it grows in a pattern, and then there should be a pattern to break, and there should be a progesterone days also. When there is no ovulation, then there won't be any progesterone. So it will be a persistent estrogen period, or the days that if there are many like this, like no ovulation, no menstruation, like that means there will be the estrogen. Estrogen will impact other hormones also, the insulin, other androgens, our the chemical pattern, whatever our biological this FSH, LH, and other hormones.
and even the stress hormones like cortisol and the PCOS, the hyperandrogenic state, right? This androgens not only will the hyperandrogenism will not only manifest as acne or the hirsutism, it will definitely affect even the uterine endometrial thickening, all that. And even the chronic conditions like dyslipidemia, cardiac disorders, and the endometrial cancer, all these are the chronic disorders which we won't, if you won't deal with the PCOS initially. So, and this weight management, I think, has to be dealt with. So only the prescribed tablets if taken, and only the mindset, okay, I'll do the exercise and the cycling or whatever, yoga, all that for 15 days, 20 days, 2 months. No, no, that may not help. Okay, and is BMI chart. Next slide, ma'am. The other entity is the sleep. As we have dealt, no, the PCOS can be dealt with lifestyle changes. One is weight management. The next, the sleep. Sleep is so essential. As you know, it is like 1/3 of our lifespan we spend on sleeping, right? Means 8 hours. Now the recommended is definitely 6 to 8 hours. Now who is sleeping for 6 to 8 hours? Most of them, even during the sleep, mobile, after the sleep, again early morning mobile, and again the TV and other social media. See how this sleep helps in our normal daily, even the routine things, because the body needs a healing thing. Like it is the sleep will restore us and relax and repair the body. And mainly the sleep hygiene is very important, because the sleep, the hormone like melatonin is not produced when we are exposed to a like the bright light just before the bed. That like the, you know, we are using the screen, right? Whatever it's the TV or the mobile or any gadgets, that will hinder the melatonin production. That definitely disturbs the sleep. So the sleep hygiene is again different entity, and it has to be dealt in detail. If anybody wish to know in detail, I'll definitely can deal with that. Now, how that sleep, the timely sleep, no, we call the timely, that the sleep cycle or the circadian rhythm of sleep, it has to be maintained. Minimum 30 minutes to sleep we should off our screen. Yeah, this is a biggest thing now. It is it's a diet, right? Diet, the food, what we eat, how we eat, and how much we eat. It's all that bad. We are like use the words, many words, right? Adequate diet, proper diet, and the balanced diet. All, and this all I think is the main theme. It is some differences, but what exactly the diet for individual? As we dealt with the weight, no, weight and the diet, they are interrelated. And it's like PCO, the PCOS lady or the adolescent girl or whoever is already diagnosed with a PCOS can definitely most of the time 90% if it's not controlled, PCOS if it's not controlled with our proper advice and the treatment, most of them, they will within the 10 to 15 years they will have a diabetes, that is type 2 diabetes, that is insulin dependent. That type 2 diabetes, that definitely what happens, why the diabetes is all because our diet, our the way we eat, and how much we eat, and the cooked and the content and the what our plate has, right? See, this less carbs and rich fiber and green leafy vegetables should be on our plate. We usually eat the morning breakfast like 2 3 idlis and little chutney or the little sambar, whatever. That is not the thing, because we are taking a high carbs, right? It is a high calorie diet, but our plate has only the minimum fiber or minimum protein or minimum thing. That will definitely, there will be a rich carbs, which in turn is like there will be an increased insulin production, uh, and it might turn into a like deposition as a fat or other things.
So this the cycle, the overeating, and this what you call using that all our unsaturated fat, other the fast foods, and very much like now we are like this ice creams, all that high fats, right? All this will definitely help like increasing our weight. That I think what we do in dealing with the weight. Definitely, we have to think about our diet also first. This weight and diet has to be balanced. Two means like if you fast, now there are many things now, the intermittent fasting, all that has come in the, oh, like it has to be followed. That has definitely have a effect on our weight, but how we have to fast, all that is matters. And this next the sleep, there's the next entity is the exercise. Need not like we have to plan for the gym or whatever the outside, or even in our own house we can have a moderate exercises, even the yoga, the meditation, cycling, some learned exercise. Now the YouTube or whatever other availability, the information is available, and even now there are many courses and the mentors are there to teach us the yoga exercises, all that. And mainly the weight, no, weight and the belly fat has to be reduced to get a proper cycled hormonal balance. And the sleep, right? The sleep, exercise, the weight, they are now interrelated. How they are interrelated? Because they are monitored by the hormones. And the pathophysiology of PCOS tells about the imbalance in the hormones. That can be definitely the PCOS imbalanced hormones can be dealt with, or the balanced can be created with all this. And mainly now everywhere the stress. Everybody you ask, even the child, the school going girls, adolescents just attained menarche. Everybody is telling this managing with the school, all that, even some small homework also, they think no, it is stressful. They think whatever they are doing is stressful. No, it cannot be. Okay, so what we do, we have to enjoy and then deal with that. Main the stress, yeah, the stress itself, the word is to utter that is now stressful, because we have everywhere around us the gadgets bombarding with information. And now the Ukraine Russian war, see, everything is in the negative waves, right? The negative waves itself will disturb our mind. We should have a positive social network. What does it mean? Anybody can tell? Yes, Diksha. Yeah, you are right. Yeah, negative people, negative information, negative things around is either from the TV, mobile, or whatever, or and even from the people. The the positive mindset people you should be around. And what we do now, your mindset is with the average of 5 people around you, right? Yeah. How does this yoga, meditation, pranayam will have an impact on our stress management? That's definitely because we get relaxed, and our increase in the immunity and all that will definitely increase our the fitness. It will help us in stress management. Yeah, the professional advice is now the critical. As we know, one entity can be dealt with each, the specialist or the professional. As you know, the doctor definitely can prescribe you the required medicine, or may not be the medicine. Even madam told, see, it depends on your age, your symptoms, and your weight, your other hormonal imbalance, even the thyroid may be associated, and other. It has to be first diagnosed with the proper professional doctor, or the learned, well practitioner that you trust. Okay, now many quacks in the society which they know little bit and they started treating, and most of us, like most of the patients have the effect on that, and they sometimes they believe and they go and get a treatment, and again it will
like viciously affect their health. But what I advise you, the professional advice is now the need of hour, and we should trust the doctor and get a consultation and follow up and advice from any professional regarding the yoga, weight reduction, the diet, exercise. All that is very, very essential. And many complications of PCOS has to be dealt, and they has to be know the, like, should know, like, we should have awareness about it, because this what you know, type 2 diabetes and like endometrial cancer, even the morbid obesity we call, right? It is, if the BMI is more than 40, then we'll have a morbid high, like it's a adverse risky obesity that will cause the sleep apnea. And the sleep pattern will be changed, which will affect our hormones, and in turn we will be like have a other psychosocial problems, like even depression, anxiety, and the behavioral and mood problems, right? All this can be dealt when we deal all these four factors. What are those? That's a weight management, the sleep, the sleep to maintain sleep hygiene, and the weight, and the exercise, and the diet, and definitely the stress management. The complications and the chronic disorders to be dealt with vigorously, because and we have to prevent it. Prevention, that what I told, all this, the lifestyle changes definitely will prevent anybody from going to this all chronic, the complications like type 2 diabetes. The obesity leads into even diabetes and even the cardiovascular diseases, and the sleep apnea due to obesity, and the weight, uh, increase in weight, increase in cholesterol, that high blood pressure. All this is the effect of the PCOS in long run. I'm very thankful to for this opportunity, Dr. Richa and Dr. Parul, and I'm available in the Sridevi clinic with this number, and you can WhatsApp me anytime, and you can definitely take a even prior appointment if you need to talk to me. And I'm very thankful to everybody for patience hearing. So thank you, Dr. Renuka, for your wonderful session. So just Yeah. a brief introduction about Parul. She is a fertility and a pregnancy wellness coach, which she has done from Dr. Sears Wellness Institute, US. She's also a lactational counselor, a childbirth educator. She's training to become a full spectrum virtual doula. She is a fertility coach, managing high risk pregnancies, help mothers conceive naturally. She helps mothers prepare the body for normal delivery, full spectrum counseling and doula support, and alternative medicine for pregnancy and childbirth. So from here, Parul will take over. Yeah, Parul Hi is back. everyone. I hope you all are doing well, and I hope this opportunity that is here in front of us, we will make the best of it. Which means that whatever is being advised to us right now by all the panelists, I'm sure you will consider it. You will definitely try to use it for your benefit, and I hope you understand that this information is really, really valuable if you take action. Right, so you've been informed about a lot of things. आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है कि आपको ये करना है, वो करना है, पर इसको जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक रिजल्ट्स मिलने मुश्किल है. Same goes for fertility, same goes for conception, same goes for anything else that you do in life. So efforts डालना बहुत ज्यादा जरूरी है. At the same time, सही जगह efforts डालने के लिए आपको सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, राइट? सो विदाउट फर्दर डिले, लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल. Right, so like I was saying, I will go ahead and quickly share with you my idea of making it easier for you to understand what PCOS is and how you can improve your fertility. So of course we have all the tips from Dr. Renuka Dolan. So of course those tips are there for you. But to make it easier for you to remember the story of you and your hormones, let me share a very beautiful story with you. Okay, so we'll be talking about lactation and PCOS today, but for you to lactate, the biggest thing is that you need to be, pregnant and give birth. Now, you will say that,
Is it necessary to give birth to lactate? No, it's not. I have been able to help adoptive women also to be able to lactate and feed their babies. So in Hindi, जन्म देना जरूरी नहीं है अगर आप किसी को स्तनपान कराना चाहते हैं. आप बच्चा अडॉप्ट भी किया है तो भी आप उसे स्तनपान करा सकते हैं, एंड उसको आप ब्रेस्ट फीडिंग के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब आप अपने बच्चे को पास ऑन कर सकते हैं. दैट बीइंग सेड, कुछ चैलेंजेस आते हैं उन लोगों के साथ जिनको पीसीओएस की समस्या होती है लैक्टेशन पर्सपेक्टिव से भी. सो मैं आपको आज सिंपल सी एक स्टोरी में समझाना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी में हो क्या रहा है मंथ ऑन मंथ. हम सभी ने मूवीज देखी हैं, हम सभी ने शोज देखे हैं, हम सभी को पता है ये सिस्टम कैसे काम करता है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइपोथैलेमस है जो कि एक शो ऑर्गेनाइजर है, ठीक है. उसको एक बहुत बढ़िया सा शो, एक बहुत बढ़िया सी मूवी बनानी है. सो वो क्या करता है, वो मनी देता है कोरियोग्राफर को कि भाई कोरियोग्राफर यू हैव टू डिजाइन, तुम्हें डिजाइन करना है, मुझे 2 लीड आर्टिस्ट चाहिए, एक हीरो एक हीरोइन, और मुझे चाहिए कि एक बहुत ही बम्पर सा शो बने. सो जो हाइपोथैलेमस है आपका शो ऑर्गेनाइजर, वो जीएनआरएच के फॉर्म में मनी देता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, राइट. सो वो रिलीज करता है जीएनआरएच और वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है जो कि हमारा कोरियोग्राफर है. अब कोरियोग्राफर को क्या चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए ना. जब तक टैलेंट नहीं होगा शो सक्सेस नहीं होगा. सो वो कोरियोग्राफर क्या करता है कि ये एफएसएच और एलएच हार्मोन्स तो है, इन दोनों को बोलता है भाई तुम दोनों के बैलेंस से, तालमेल से तुम मुझे एक ऐसा टॉप का परफॉर्मर लाके दो जो मेरी पिक्चर हिट करा दे. सो ये एफएसएच और एलएच लग जाते हैं अपने काम पे और ढूंढने लगते हैं वो डोमिनेंट फॉलिकल जो कि डायरेक्टर की पिक्चर को हिट कराने वाला है ना. उनको कौन चाहिए, उनको ऐसा फॉलिकल चाहिए जिसमें से एस्ट्रोजन निकलता हो और जो कि डोमिनेंट फॉलिकल हो. अब यहाँ पे आपकी स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब आपको एक डोमिनेंट फॉलिकल नहीं मिल रहा है बल्कि बहुत सारी सिमिलर लेवल की एक्ट्रेसेस आपके सामने आके खड़ी हो रही है और आप देख रहे हो कि इसमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो आउटशाइन करे, बट एट द सेम लेवल ये सारे के सारे फॉलिकल्स टू सम लेवल तक अपने आप में बहुत एक्टिव है और अच्छा काम भी कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि हमें लीड डांसर नहीं मिल पाता है. हमारे लिए लीड डांसर बहुत जरूरी है कंसीव करने के लिए. सो कंसीव करने के लिए या फिर एक हेल्दी नॉर्मल पीरियड के लिए हमें एक लीड डांसर होना जरूरी है. जब वो नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि पेन, डिलेड पीरियड्स, जो कि अभी डॉक्टर्स ने आपके साथ शेयर किया, राइट. तो क्या होता है कि फॉलिकुलर स्टेज जो होती है जिसमें कि हम ये पूरा काम कर रहे होते हैं, हम फॉलिकल ढूंढ रहे होते हैं ऑल दैट, उस स्टेज में बहुत सारे रिहर्सल्स चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल तो एफएसएच एंड एलएच का एक मिड साइकिल सर्ज होता है जिसमें कि हम लोग लीड डांसर को रिगरस ट्रेनिंग दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि अब लीड डांसर का तो एक तो टाइम आएगा ना जब हमें लीड डांसर को बिल्कुल प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं अब तुम्हें शो पे जाना ही जाना है. उसके लिए एफएसएच और एलएच का साइकिल में सर्ज होता है और तभी आता है आपका ओव्यूलेशन का टाइम. इसी सर्ज की वजह से फर्टिलिटी मॉनिटर्स और स्ट्रिप्स जो है आपका ओव्यूलेशन चेक करने में हेल्प करते हैं. आपने सुना होगा कि इफ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट तो ओव्यूलेशन स्ट्रिप्स आती हैं, आप चेक कर लीजिए कब आपका ओव्यूलेशन होने वाला है. तो वो जो स्ट्रिप्स हैं वो आपका यही एफएसएच और एलएच मिड साइकिल सर्ज चेक कर रही हैं वो स्ट्रिप्स, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि यूट्रस जो है ना आपका कॉस्ट्यूम मेकअप स्टेज, अब भाई शो से पहले कॉस्ट्यूम मेकअप स्टेज इज नेसेसरी, इट्स इंपॉर्टेंट. सेम वे उस लीड डांसर के आने से पहले या शो के होने से पहले हमें बहुत 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 जरूरी है कि हमारा यूट्रस पूरी तरह प्रिपेयर हो टू रिसीव द लीड डांसर, ठीक है. तो यूट्रस रेडी हो जाता है, लाइनिंग थिक होने लगती है, ओव्यूलेशन फेज आ जाता है, सर्विक्स थिन हो जाता है जिससे कि स्पर्म्स एंटर कर सकें. तो ग्रैंड रिहर्सल आपकी अब ऑडियंस के लिए ओपन है ताकि सर्विक्स अंदर आए, सर्विक्स से स्पर्म्स अंदर आए बिकॉज स्पर्म हमारा ऑडियंस है, राइट. सो एट द सेम टाइम क्या होता है कि इसी समय ल्यूटल फेज में अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम सप्लाई ऑफ जीएनआरएच हो जाता है ना, एंड देन प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है जिसमें कि ग्रूमिंग चल रही होती है. अब ये प्रेगनेंसी क्या है, इसमें कहाँ से हो रही है प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी क्या हो रहा है कि जब ये पूरा सिस्टम चल रहा है आपका, ये सप्लाई ऑफ मनी वापस फिर से आ गया और प्रैक्टिस फिर से हो गई, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनने लगे और एक ग्रेट शो हुआ जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन इज योर ग्रेट शो, बहुत सक्सेसफुल हुआ, ठीक है. तो क्या होता है बीच में, प्रेगनेंसी जो है इस कहानी का ट्विस्ट है, बीच में व्हेन दैट सर्विक्स थिन्स ना,
स्पर्म को अलाउ करने के लिए, एट द सेम टाइम एक स्पर्म उसमें स्काउट स्पर्म घुसता है और वो जाके लीड डांसर के साथ मेट करता है और समहाउ वो एक जाइगोट बन जाता है और उसके बाद आके इम्प्लांट हो जाता है आपके यूट्रस में। कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, आपका शो कैंसिल हो जाता है अगले 9 महीनों के लिए अपेरेंटली। बहुत लोगों का नहीं भी होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ब्लीडिंग होती है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। बट टू अंडरस्टैंड दिस, आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं और आप प्रेग्नेंट हो जाते हो। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू गेट प्रेग्नेंट। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपके साथ? सिंस यू हैव PCOS, आपका फॉलिकल का इशू है, वेरिन डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन पा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई यू गो फॉर योर फॉलिकुलर स्टडीज एंड एवरीथिंग। सो दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू गिव यू इन अ स्टोरी फॉर्म, सो दैट आप इजीली इसको रिमेंबर कर सको कि कहाँ प्रॉब्लम है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए याद रखना कि मुझे किस बारे में सवाल पूछने हैं, राइट? नाउ सिंस यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, खुशी की बात यह है कि आपके मेंसेस कैंसिल हो गए हैं और आप जो चाहते थे वो हो गया है। आपके टेस्ट पे 2 पिंक लाइंस दिख रही हैं। अब क्या, राइट? सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, सबसे पहला जो प्रेगनेंसी में साइन हम लोग सुनते हैं यूजुअली इज दैट ब्रेस्ट में थोड़ा सा सेंसिटिविटी आना, टेंडरनेस आना, ब्रेस्ट में स्वेलिंग आना, एरोला का बड़ा होना, डार्कन होना। सो ब्रेस्ट चेंजेस आर वन ऑफ द अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। व्हाई? Because the moment you get pregnant, the hormonal makeup changes, your breast starts going through a development because the breast is responsible for the nutrition of your child, and वो जैसे जैसे बच्चा आपके अंदर बन रहा है वैसे वैसे आपके अंदर मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। अराउंड 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपका दूध ऑलरेडी बनने लगता है आपके बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। सो बिफोर आई डीप डाइव इनटू इट, एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हर एक को पता होनी चाहिए कि हम सभी बोलते हैं माँ का पहला गाढ़ा दूध देना जरूरी है। अब बच्चा 3 दिन तक किसी को भी दूध नहीं उतरता है, लैक्टोजेनेसिस 2 की जरूरत पड़ती है। उस ड्यूरेशन में बच्चे को आपको फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं होती है। हर 2 घंटे पे माँ के ब्रेस्ट से आप बच्चे को लगा दीजिए, या माँ के ब्रेस्ट से जो कोलेस्ट्रम है जो कि पीला गाढ़ा दूध होता है, आप वो दे दीजिए। उतना बच्चे के शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ मेडिकल रीजन इन्वॉल्व्ड। सो बी अवेयर, आपका बच्चा आपके कोलेस्ट्रम पे बहुत इजीली शुरू के 3 दिन सर्वाइव कर सकता है और उसके बाद आपका ब्रेस्ट कोपियस अमाउंट ऑफ मिल्क बनाएगा आपके बच्चे के लिए। सो विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चा आपके पास हो, एंड स्पेशली अगर आपको PCOS की प्रॉब्लम है। आई टेल यू व्हाई। PCOS से क्या होता है कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आपका जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होता है। देयर इज बिकॉज इट्स अ हार्मोनल कंडीशन, like the doctor said that androgen overload होता है आपके पास, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। सिमिलरली जब ऐसा होता है तो आपके ब्रेस्ट पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। तो क्या 3 इम्पैक्ट हम देखते हैं? यूजुअली हम देखते हैं कि ब्रेस्ट जो है हाइपोप्लास्टिक हो जाते हैं, राइट? या फिर सीधी भाषा में बताऊं तो ब्रेस्ट में जो ना ब्रेस्ट टिश्यू होता है जो कि एक्चुअली मिल्क बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, फैट टिश्यू ज्यादा होता है, राइट? दूसरी चीज ट्यूबुलर ब्रेस्ट हो जाते हैं, मतलब जो ब्रेस्ट का शेप होता है ना वो ट्यूब के शेप में हो जाता है, निपल्स नीचे की ओर आ जाते हैं और ट्यूब के शेप में ब्रेस्ट बन जाता है, which also becomes a problem in some cases depending कि आपका और आपके बेबी का जो मदर बेबी डायट है वो कैसा चल रहा है for lactation, right? So large breast with fatty tissue means हमें वहां पे fatty tissue ज्यादा है और breast milk का टिश्यू थोड़ा सा फैटी टिश्यू ज्यादा है और ब्रेस्ट मिल्क का टिश्यू थोड़ा सा कम है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि सप्लाई में कहाँ प्रॉब्लम आता है। सो हमें ये पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सप्लाई एंड डिमांड का गेम है, जितना डिमांड बढ़ेगी उतना सप्लाई बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम PCOS जो है वो आपकी सप्लाई को अफेक्ट करता है। तो अगर आप माँ बनना चाहते हैं या आप प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी, या आप सोच रहे हैं बच्चों के बारे में और आपको PCOS की दिक्कत है, तो आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि लैक्टेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है मेरे लिए, सिंस मुझे PCOS है। तो आपको मेक श्योर करना है, जो डॉक्टर डॉलिन ने आपको बाकी सारी चीजें बताई वो आपको करो, वो सभी आप कुछ मैनेज करोगे तो आपको हेल्प मिलेगा विद लैक्टेशन ऑल्सो। बट
स्पेशली फॉर लैक्टेशन आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपका जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है उस पर आपको अपना नोटिस करना बहुत जरूरी है, वेदर 1 या 2 कप साइज आपका ब्रेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं। यूजुअली अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलता है पीसीओएस में और लैक्टेशन में। उसके अलावा हायर एंड्रोजन्स जो है वो लोअर सप्लाई लीड करता है, बिकॉज वो ऑक्सीटोसिन को इनहिबिट करते हैं, और हमें सबको पता है कि ऑक्सीटोसिन के बिना जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है जिससे कि दूध उतरता है वो इतना एफिशिएंटली नहीं हो पाता। तो हमें इसमें कुछ एक्सटर्नल मेजर्स देने पड़ते हैं सो दैट आपका दूध उतरे, राइट। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका बीएमआई और इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसा कि बताया गया है, डॉक्टर डॉलिन ने आपसे डिस्कस भी किया है कि आपका वेट जो है वो पीसीओएस की वजह से नहीं बढ़ रहा है, आपका वेट ज्यादा है इसलिए भी पीसीओएस हो सकता है। सो ये जो है विशियस साइकिल है जिससे कि आपको बाहर आना बहुत जरूरी है, और लाइफस्टाइल को चेंज करना सबसे अच्छा तरीका है, इजी तरीका है, लेस साइड इफेक्ट्स का तरीका है, जिससे कि यू कैन गेट आउट ऑफ इट वेरी इजीली। नाउ व्हाट डू यू डू? फॉर एग्जाम्पल यू हैव पीसीओएस एंड यू वांट टू ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड, तो क्या करना है, व्हाट हेल्प्स? सबसे पहली चीज अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा पैदा होता है इधर सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन में थोड़ा ज्यादा डिले देखने को मिलता है, बट दोनों ही केसेस में हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको अर्ली स्किन इनिशिएशन करना बहुत जरूरी है। स्किन टू स्किन कैंगरू केयर विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है। सो आप जहां भी जिस भी हॉस्पिटल में जन्म देने वाले हैं, आप वहां के गायनेकोलॉजिस्ट अपने डॉक्टर से जरूर ये बात डिस्कस कीजिए कि मुझे वो गोल्डन आवर चाहिए मेरे और मेरे बच्चे के लिए, बिकॉज मुझे पीसीओएस है। अगर ये डिले होता है या अगर ये नहीं हो पाता है तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें कि आपका मिल्क आएगा वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे कि अफेक्ट होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। लाइक 6 महीने आप ब्रेस्ट फीड कर पाओगे, 7 महीने कर पाओगे, 8 महीने कर पाओगे, प्लस इस 6-7 महीने में क्या आपकी सप्लाई रहेगी, वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसका इस बात पे कि आपने अर्ली आवर में क्या किया है और क्या नहीं किया है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। सेकेंड थिंग, डाइट मैनेजमेंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आपने सुना होगा मेथी दाना, गोंद का लड्डू और बहुत सारी चीजें जो दी जाती हैं नई माओं को कि दूध ज्यादा बने, बट पीसीओएस से बहुत सारे ऐसे गैलेक्टोगॉग्स हैं, नेचुरल गैलेक्टोगॉग्स हैं, एग्जांपल शतावरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि पीसीओएस के साथ अच्छे से फिट नहीं होते हैं। सो बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के आप किसी भी प्रकार का गैलेक्टोगॉग्स या सप्लाई बढ़ाने के लिए कोई नेचुरल रेमेडी ना लीजिए, बिकॉज नेचुरल रेमेडी काम तो बहुत अच्छा करती है आपके लिए, बट एट द सेम टाइम आपके पीसीओएस की वजह से कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। प्लस अगर हो सके, इफ इट इज पॉसिबिलिटी, आपके आसपास कोई भी लैक्टेशन काउंसलर हो या फिर यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो, बट जहां भी आपको सपोर्ट मिले या जहां भी आप कंफर्टेबल है, यू शुड गेट इन टच विद somebody who is into lactation counselor. Make sure that person has at least 90 hours of lactation education with certification with them. अपना पोजीशन और लैच करेक्शन कराना बहुत जरूरी है। इन ब्रेस्ट फीडिंग ना बहुत लर्नड स्किल है। लाइक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज हम माँ बने और कल हमें ब्रेस्ट फीडिंग भी आ जाए, बच्चे का डायपर बदलना भी आ जाए। लाइक शायद दुनिया भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शादी होती है और अगले दिन लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आप माँ बन जाए, राइट। सेम वे जब आप माँ बनते हैं तो अगले दिन लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आप बच्चे का बिल्कुल टेक ऑन कर लीजिए, आप सुपर वुमन बन जाइए और आप सब कुछ हैंडल कर लीजिए। फैक्ट ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग सीखने से आती है, ट्राई करने से आती है, बहुत हिट्स एंड मिसेस होते हैं, बहुत सारी ट्रबल्स होती हैं, बट देयर आर ट्रेन्ड पीपल हु कैन हेल्प यू विद दिस। सो कनेक्ट विद अ लैक्टेशन काउंसलर जो कि आपको सही गैलेक्टोगॉग्स रेकमेंड कर पाए। आपका पोजिशनिंग एंड लैच करेक्शन जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि आपका बच्चा कितना मिल्क रिमूव कर रहा है ड्यूरिंग फीडिंग, सो दैट अकॉर्डिंगली चेंजेस लाए जा सके। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन के, नर्स के कहने पे, इसके कहने पे, उसके कहने पे निपल शील्ड मत यूज कीजिए। इसलिए मैं कहूंगी निपल शील्ड मत यूज कीजिए, बिकॉज निपल शील्ड क्या करती है, आपके ब्रेस्ट और आपके बच्चे में ना बहुत सीरियस कनेक्शन है और बहुत प्यारा सा बॉन्ड है। सो जब बच्चा आपके ब्रेस्ट पे आता है तो उसके सलाइवा से वो आपको सारा इंफॉर्मेशन भेजता है आपके ब्रेन तक कि मेरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है इस समय, जो कि पूरे लाइफ टाइम बच्चे की बदलती रहती है। और डे 1 से अगर उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी तक नहीं पहुंचती है तो आपका ब्रेस्ट मिल्क उस बच्चे की नीड्स के हिसाब से अडेप्ट नहीं हो पाता है, राइट। सो आपका ब्रेस्ट मिल्क में वो पोटेंशियल है
कि अगर आपका बच्चा 2 हफ्ते पहले पैदा हो जाता है ड्यू डेट से, तो आपके ब्रेस्ट मिल्क का कॉम्पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होगा। 2 हफ्ते बाद पैदा होता है तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे की एज, बच्चे की नीड के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। निपल शील्ड उसमें एक बैरियर का काम करती है, जिसमें कि वो सही इंफॉर्मेशन ब्रेस्ट तक नहीं पहुंच पाता, पहली चीज। दूसरी चीज, वो निपल कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो बच्चा बॉटल ज्यादा ले लेता है, आपका ब्रेस्ट कम लेने लगता है। और तीसरी चीज, कभी कभी बच्चे बिना निपल शील्ड के पीते ही नहीं है दूध, फिर आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग आप बहुत समय तक कर सकते थे, राइट। सो निपल शील्ड बिना एक्सपर्ट एडवाइस के मत यूज कीजिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सेम गोज फॉर ब्रेस्ट पंप, हो सकता है आपको वो 2000 इन्वेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, बट मोस्टली लोग पहले ही ये सब इंतजाम कर लेते हैं कि हमें सक्सेसफुल करना है। अंडरस्टैंड योर इंटेंशन में समझ सकती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे को अपना दूध पिलाना है, बट इंटेंशन के साथ साथ सही इंफॉर्मेशन और सही शुरुआत होना ब्रेस्ट फीडिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सो अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू about PCOS and lactation. I know this is very brief, but I just wanted to give you an idea because you might not even be pregnant yet. आप अभी pregnant भी नहीं हो, but मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि in the end of the day challenges हैं और उसके solutions भी हैं. The only thing is you have to seek help, right? हैरी पॉटर देखी होगी किसी ना किसी ने यहाँ पे, हॉगवर्ट्स में हेल्प उसको मिलती है जो हेल्प मांगता है। सो दुनिया का ही यही दस्तूर है, आपको जरूर हेल्प मिलेगी इफ यू आर रीचिंग आउट टू पीपल दैट यू नो मुझे इस चीज में हेल्प चाहिए। सो आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड दिस इज माय ईमेल आईडी। अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए या अगर आपको कुछ डिस्कस करना है रिगार्डिंग फर्टिलिटी, गेटिंग प्रेग्नेंट एंड नेचुरल केयर फॉर योरसेल्फ with PCOS and thyroid and such issues, you can get in touch with me. And thank you so much for having me here, and thank you so much Dr. Richa for inviting me for this session, because lactation is mostly overlooked a lot of times, but वो बहुत real problem बन जाता है जब आपका नया नया बच्चा आपके हाथ में और आपको पता है कि आप ही responsible हो इसकी nutritional needs पूरी करने के लिए, right? So thank you so much everyone. So thank you, Parul. This was fantastic, and I think something which is extremely important, but at the same time, like you correctly said, it is often neglected also. Thank Dr. Dolan, Dr. Parul for kind of giving their expert opinions about the various issues. So now I think we are in a position to take up the questions. Thank you all of you for attending this session, and thank you, Dr. Renuka. So I'm ending this session then.